Today we are going to start our last unit of the syllabus, that is data link layer. And in this unit we will understand the role of the data link layer in TCP/IP protocol suite, and we will see what are the functions that a data link layer perform. Let me briefly point out what are the functions that the data link layer perform, and we are going to study those functions. The first important function of data link layer that is not listed here is hope to hope delivery. We call it hope to hope delivery. Okay, this is one of the important function. We will discuss about this function in detail later. After that, the next function of data link layer is reliable data transfer. Okay, so reliable data transfer means whatever data is being sent by sending node, it should be delivered to the destination node with guarantee actually. Most of you can say that almost 99% probability or 0.9999 probability. There may be one, there may be some rare occasion that time it may not be possible to achieve reliable data delivery, but reliable data delivery means almost guaranteed delivery of the data. Then this layer also does flow control, that we have seen also in transport layer. We have seen that transport layer also offers reliable data delivery, and in order to achieve reliable data delivery, we have already studied what transport layer does. A sort of it does the retransmission, then each packet will be having sequence number. In order to control the flow of the data, receiver is giving control, and receiver advertise a window size, and we have seen that in sliding window hierarchy protocol. So the almost the same protocol is applicable here, but the difference is here is that at that time where unit of the data transmission was byte, and each byte was having a sequence number, but here unit of data transmission will be frame. So at transport layer the window size was in terms of bytes, but here the window size will be in terms of frame. So let's say the window size at data link layer is, let's say, 8. So it means 8 frames can be transmitted without waiting for any acknowledgement by the sender. Okay, so the concepts are almost same. We will not go into those concepts again and again, and you just need to go through if you have any other book like Forojan or Peterson or any other book. Jisme concepts are almost same. You just need to have a look on those concepts, relook again on those concepts. So I will not discuss those concepts. Then the next topic or the next function of data link layer is very important. We will discuss this function, that is error detection and correction. So this is the function that is actually a function that is associated with reliable data transfer. Okay, we have not studied this function in very much detail at the transport layer, so we will cover this section here in detail. Then the another task of data link layer is, since the channel may be shared or may be dedicated. If channel is dedicated between sending and receiving machine, then there is no issue to control the access of the channel. But suppose if there is a shared channel, then the channel's access have to be regulated. Okay, this is similar to a class where a lot of people are sitting and they are told to discuss on a topic. आपको एक किसी टॉपिक पर ग्रुप डिस्कशन करना है. सो इफ़ यू आर अलाउड टू डू ग्रुप डिस्कशन ऑन ए टॉपिक, देन योर डिस्कशन नीड टू बी रेगुलेटेड. आपके डिस्कशन को एक रेगुलेट करना पड़ेगा प्रॉपरली. देयर हैज टू बी समवन who will regulate your discussion, otherwise your discussion may be converted into a kiosk. ठीक है, so the regulator will be there who will decide कि अब कौन बोलेगा and उसके बाद कौन बोलेगा. That means who will tell next, who will speak next, and so on, right? And when to speak, when not to speak, something like that. Similarly, in the network also, if channel is shared, for example a wireless network is there. Let me give you an insight about this. So suppose there is an access point.
this is an access point, and there are multiple let's say laptops that are connected through wireless signals, and all these laptops want to communicate with this access point. Okay, so if we want to achieve the communication, you have to regulate who will talk to this access point next. ठीक है, this is an access point. So कौन access point से बात करेगा एक टाइम पर? If two or more nodes will talk to the access point simultaneously, access point will not be able to listen anyone. This is similar to the situation when suppose in class the teacher is asked by more than one student simultaneously. More than one student ask a question to the teacher. Okay, so since both of the students simultaneously asking their questions, so it may be the case that teacher may not hear their questions properly, and so he or she will not be able to answer the questions raised by students. Okay, so when channel is shared, then it is required that the access to the channel need to be regulated. So for this regulation we require a protocol. Obviously that protocol is called MAC. In short, in full form, the full form of MAC is medium access control or media access control. तो दोनों टर्म यूज होती हैं, मीडिया एक्सेस कंट्रोल. So we will see some of the media access control protocol, and actually different LAN technologies uses different MAC protocols. Then we will also have a look in link layer addressing scheme. At data link layer also some addressing scheme is used that we usually know as physical address, है ना? So these are some of the topics that we are going to discuss. So first let's start with some basic terminologies or some of the basics things that are associated with link or this data link layer. As you know, host and routers are the nodes. We refer them host and routers, दोनों को हम node से term से refer करते हैं. So node means host or routers. Communication channel is called links. Okay, for example, this is a host, this is a host, this is a host, all these, and these lines edges are links. These are communication links, and you know that there may be variety of communication links, like you may have wired links, you may have wireless links, or you may have local area network related links, LAN links you can say. Okay, and one more thing, at layer 2 packet will be termed as frame. Actually layer 2 पे जो चंक है, the unit of data unit that will be used we will call it frame. जैसे नेटवर्क लेयर पर हम डेटा के चंक को पैकेट के फॉर्म में रेफर करते हैं. एट ट्रांसपोर्ट लेयर वी कॉल द चंक सेगमेंट, एंड एट दिस लेयर वी विल कॉल इट फ्रेम. ठीक है, सो व्हाट विल फ्रेम कंस्टिट्यूट, और फ्रेम विल कंसिस्ट ऑफ एक्चुअली two components mainly. Generally it have three components. First is called header, then you have second component data, and third will be trailer. Generally header और trailer को jointly मिला करके we can call it header. दोनों को jointly header कर बोल सकते हैं, दोनों को differentiate नहीं करना चाहते. ओके, एक आपने ये चीज़ नोटिस की होगी, ओनली डेटा लिंक लेयर एड्स ट्रेलर, बाकी सब लेयर्स हेडर ऐड करते हैं. नाउ व्हाट दिस डेटा विल बी, so this data field will be actually it contains a packet that you receive from network layer. Okay, so your packet will be put here. So your frame will contain a packet and with some header and trailer. And now it is important to know that this header and trailer will be read by the recipient data link layer. Okay, so before delivering the packet to the network layer, these header and trailer will be removed by the data link layer. Now what is the responsibility of data link layer? As I already told you that data link layer receives packet from network layer, and then it forwards the packet towards destination, or you say the next hop. We have seen that in routing table there is an entry next hop. So router sends the packet towards next hop. So router is the sender
and other router that is referred as next hop is the destination. Okay, and this delivery is called one hop delivery. I will explain that in later. Okay, so now let's talk about the delivery mechanism that is offered by transport layer. So actually we have seen two kind of deliveries. You talk about if you talk about network layer does host to host delivery. Okay, and network layer does host to host delivery. We call it machine to machine delivery, host to host delivery. And डेटा लिंक लेयर, शॉर्ट में DLL लिखते हैं, नेटवर्क लेयर को NWL लिख सकते हैं. इट ऑफर्स होप टू होप डिलीवरी. Now let's try to understand what is the difference between them, both of them, hope to hope delivery. Now as you know that suppose there is a sender and there is a receiver. You know that there is a path between sender and receiver that contains multiple intermediate hopes or devices, you can say. So I am drawing those devices as a router. Many times these may be network as well. Okay, and this is sender and this is your receiver or destination. Okay, sender want to send this packet, let's say, to this destination, and now this is actually part of some or this is actually a network. These two also are connected to the network. The network of these devices may be same or may be different, and there may be multiple networks, or it may be an internet network of networks. Now we see that network layer does host to host delivery. So the responsibility of network layer is to deliver packet from this node to this node. Okay, but you as I already told you when we were discussing network layer doesn't do actual delivery. It depends on the data link layer for delivery. So how it happens? So let me give you an example, one example, so that by this example you will be able to understand this delivery mechanism or the difference between both of these delivery better. So suppose that you have planned to do Char Dham Yatra. Okay? You know that in India many people do Char Dham Yatra. So what you can do for doing Char Dham Yatra? So suppose the Char Dham Yatra can be done by some, maybe provided by some travel company. Generally IRCTC is one of the company that offers this. Some traveling agency may be offering a package. Now your Char Dham Yatra may be having multiple points that you need to visit, and there may be ultimate destination जहाँ पर आपको पहुँचना है, final destination that will be there. So maybe you may be visiting let's say from one place, let's say that that may be केदारनाथ से बाकी के और भी जो हैं आप ट्रैवल करते हुए जा रहे हैं, एंड देयर आर मल्टीपल डेस्टिनेशंस इन दैट रूट और दैट प्लान. चार धाम यात्रा में कई सारे रूट्स हैं, और एंड योर चार धाम यात्रा एंड्स एट रामेश्वरम. Okay, it may be like so. What you're doing, what traveling agency is doing? So traveling agency will actually arrange your tour from your home, or let's say from let's say your home is there, so your home place is there. So from your home to Kedarnath, then Kedarnath to Rameshwaram. So ultimately, let me change again. This is your source from where you will start, and this is your destination that you want to reach. Now your traveling agencies will make arrangement to take you from home to Kedarnath, then Kedarnath to any other destination that is there into the route, then to a next destination, and so on, and ultimately you will be sent to Rameshwaram. Okay,
and this is how your journey will end. So now traveling agency may do plan, and it may plan that you will travel from your home to Kedarnath, let's say by air. And let's say this is Ujjain, Mahakaleshwar, and from Kedarnath you may be traveling by train. Okay, I'm not showing you multiple places that may will be between like Delhi or the way आप जाएंगे. So by train you may go there, and then uh, uh, maybe some other holistic place is there, and where you are going let's say by bus, and there from that place you are going again by train. Okay, so this is how your whole plan is arranged by this traveling agency. Okay, now your traveling agency may not having any kind of transport service. They are just a traveling agency. They do not run any kind of transport service. That means they don't. This traveling agency maybe let's say XYZ Limited. This is a traveling agency, and this traveling agency doesn't own any kind of airlines. They doesn't own any train service. They doesn't own any bus service, and so on. Okay, now still they are arranging a travel for you. Okay, how? So they may be having some contract or some association or some MOU with airlines. So let's say they are having one airlines with, let's say, Go Air, or maybe Air India. You can take another example also, and then they are having some arrangement with, let's say, maybe Indian Railway, and then maybe they are having some arrangement with some private bus service, maybe some bus service, I don't know any some bus service, maybe that may be a, let's say bus service that belongs to UP state, UPSRTC. Okay, let's say UP roadways ki bus service hai, wo, that is the bus service, and then here again Indian Railway. So now traveling agency job is to arrange your complete traveling plan कि आप कैसे कैसे जाएंगे, and they are just facilitating. So at your home you will reach to the airport, and at airport you will board Go Air flight, and you will reach to the Kedarnath, where they may made certain local arrangement for you. From Kedarnath to let's say you go to Ujjain by train, and then from Ujjain to at some other place there is a Trambakeshwar, let's say maybe in Maharashtra, and from there by train you reach Rameswaram. Okay, so now all these arrangements कि आपको घर से एयर लेना है, बाय एयर जाना है, फिर यहाँ से फिर आपको ट्रेन से जाना है, and so on. So this arrangement is done by the traveling agency, but actually your transportation is done by different companies. Like Go Air is doing transportation of your from your home city to Kedarnath, and then from Kedarnath you are reaching Ujjain by train, and then from Ujjain to, let's say, Trambakeshwar Mahadev Mandir, or maybe Somnath, you can choose. Then you are reaching by bus, and then from here you are reaching Rameswaram by train. So all these arrangements was done by this traveling agency. So your traveling agency's this job is actually equivalent to the network layer. So similar kind of things is done by the network layer also. You see that network layer creates routing tables at the different routers. So that is a kind of arrangement कि आपको यहाँ से कहाँ जाना है, ऐसे कहाँ जाना है. All these arrangements have been made by the network layer, and they have just decided a route, actually shortest route for you. Network layer have decided the shortest route for your packets actually. And in this way network layer is ensuring that you will reach to destination by shortest path. But actual destination में पहुंचाने का काम कौन कर रहा है आपको? Different agencies that are involved at this point. Okay, so these are actually your different kind of link layer actually. So from this place to this place is called one of, if you see this place to this place, delivery is done by airline, and from here to here you are being transported by railway, and so on. Okay, so this kind of transportation is equivalent to the transportation that is done by data link layer. Now let's come to the example of data link layer here. Now
योर नेटवर्क, लेट्स कम टू द टेक्निकल एग्जाम्पल अगेन. ये तो रियलिस्टिक एग्जाम्पल था, अब इसी को हम यहाँ पे एनालॉगी सेट करते हैं. नाउ दिस इज योर equivalent to home. Your packet is here and your packet want to go here. Now network layer is making an arrangement कि आप यहाँ से यहाँ जाएंगे, then यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे and यहाँ से यहाँ जाएंगे. So all arrangement has been done by the network layer for your packet. Now your packet, by just making arrangement, your packet delivery will not be successful until these parties will not take role. So here the data link layer will take the role or take the responsibility of sending packet from this machine to this router. Let's say this is R1, and then when packet arrives safely here with reliability, then again the network, there is a data link layer running at this node, and there is a link. Now this link may be different, this link may be different. For example, this link may be a optical fiber link, this link may be a Wi-Fi link, and so on. So each link may be different, similar to here you see at one place you are boarding airline, then at one place you are being transported using train and so on. Similarly here you will have different kind of data link layer. One may be a Wi-Fi link, it may be OFC, optical fiber cable, it may be a coaxial cable, or maybe a Ethernet, and so on. So then once your packet arrived at R1, here this WLAN link, Wi-Fi link's responsibility, or data link layer of this Wi-Fi network's responsibility is to deliver packet from router R1 to this router, let's say R2 safely. So यहाँ से यहाँ तक की जो reliable delivery है, this is done by this Wi-Fi network link, and then from here to here delivery will be done by this Ethernet network reliably. Okay, so this is how the data link layer is doing delivery. And then here again यहाँ पे जो data link layer है, this will deliver to the packet at the data link layer here, and now the data link layer at D will deliver the data to the upper layer, that means network layer at the machine D. So this is how your packet is delivered by jointly network layer and data link layer. So आप analogy अगर आप देखें तो your network layer job is the job similar to the traveling agency. ट्रैवलिंग एजेंसी जो जॉब कर रही है वैसा ही जॉब आपकी नेटवर्क लेयर परफॉर्म करती है. सो इट इज जस्ट मेकिंग एन अरेंजमेंट फॉर द ट्रैवलिंग ऑफ द पैकेट. नेटवर्क लेयर का क्या काम है? नेट पैकेट के लिए जो ट्रैवलिंग का जो अरेंजमेंट है वो करना, कौन सा पाथ जाएगा, कैसे फॉरवर्ड होगा एंड सो ऑन, वो अरेंजमेंट कर दिया नेटवर्क ने. देन दैट इज डन. देन वंस इट इज डन, देन एक्चुअल जो डिलीवरी है वो डेटा लिंक लेयर्स करेंगे. एंड यहाँ से यहाँ तक की डिलीवरी को हम वन होप डिलीवरी बोलते हैं. यहाँ से डिलीवरी, दिस इज कॉल्ड वन होप. फ्रॉम हियर टू हियर वन होप डिलीवरी, एंड हियर टू हियर वन होप डिलीवरी. सो दैट्स व्हाई द डेटा लिंक लेयर डिलीवरी इज कॉल्ड होप टू होप. दिस इज फ्रॉम हियर टू अब. यू कैन थिंक ऑफ ए काइंड ऑफ जंप. सो पैकेट जंप्स फ्रॉम हियर टू हियर, देन फिर जंप्स फ्रॉम हियर टू हियर एंड सो ऑन. Okay, so that's why this delivery is called hope to hope delivery, and delivery done by the network layer is called host to host delivery from this machine to this machine. But you now I think you may have understood that what is the difference between the delivery that is done by network layer and data link layer. Do you have any question? Host delivery is not same. Host to host means you are doing delivery from here to here, but to achieve delivery from host to host means from delivery from this machine to this machine, you are relying on data link layer, sorry, network layer. So network layer is doing this delivery from this point to this point, but this delivery is not the actual one. We are just seeing this as this is delivery is done by network layer, but actually this delivery is performed by, or it consists of host to host delivery made by many hope to hope deliveries. One, for in this case 1 2 3 4. So 4 hope to hope delivery जब हो जाती है, then you receive one host to host delivery. So host to host delivery का मतलब है this machine delivery from this machine to this machine, and delivery from this machine to this router is called hope to hope delivery. So host to host delivery here is containing 1 2 3 4 hope to hope delivery. So 4 hope to hope delivery gives you one host to host delivery. ठीक है.
सो ट्रैवलिंग एजेंसी की तरह से है, जैसे आपको यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जो हुआ, दैट इज, सो यू मे से दैट आई एम जस्ट गोइंग टू रामेश्वरम, बट आप रामेश्वरम कैसे पहुँच रहे हैं? इंटरमीडिएट डिवाइस नोड्स के थ्रू। सो यहाँ से यहाँ ले जाना है, फिर यहाँ से यहाँ ले जाना, ये जो वो है दैट इज डन बाय ट्रांसफॉर्म नेटवर्क, सॉरी डेटा लिंक लेयर, बट जस्ट ये डिफरेंस है। Trailer. So we will talk about this. Header and trailer actually, though they are especially actually control information. Both of the header and trailer contains control information. Okay. So trailer ऐड करने के पीछे एक खास लॉजिक है, वो हम एरर कंट्रोल के टाइम पर डिस्कस करेंगे। एक्चुअली जो आपका चेकसम है ना, वो ट्रेलर में ऐड किया जाता है, इसलिए हेडर में ऐड नहीं किया जाता है। There is a reason to do that. We will talk about this when we will talk about error control. ठीक है, बाकी both contains control information. Control information means information regarding your data or to do proper delivery of the data. So data की delivery से related और transmission से related जो भी additional information है, that is put into header, and some information is also need to put into the trailer as well. ठीक है, सो कुछ प्रोसेसिंग एफिशिएंसी की वजह से कुछ इन्फॉर्मेशन ट्रेलर में डाली जाती है। इसमें एरर करेक्शन से रिलेटेड, एरर डिटेक्शन करेक्शन से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो ट्रेलर में रखी जाती है। सो वो कुछ कंप्यूटेशनल रीजन है उसकी वजह से। बाकी बोथ कंटेन्स कंट्रोल इन्फॉर्मेशन, कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, so now let's talk about the link layer service. One service we have discussed, hope to hop delivery. Now the another service is framing and link access. So framing means the framing is simple. What data link layer does, it does framing. So framing means creating a frame. Framing means to create a frame. Now कैसे frame बनाना है? So what the data link layer will do, it will take the packet that is coming from network layer. So let's say this is your packet that is coming from network layer. Now what data link layer will do, it will add a portion in the beginning and a portion or some control information at the last. So this is called header and ये last में add किया गया, so that's why we call it trailer. Short में आप चाहे तो T लिख सकते थे, but I am writing full word, header and trailer. And now the whole thing is called frame at the data link layer. So this process is called framing. So obviously the framing will be done at the sending side, and at the receiving side its opposite will happen. क्या होगा receiving side पर? At the receiving machine this header and trailer are read and इनको यूज read करने के बाद पैकेट will be processed according to the information given there, and then यहाँ से जो डेटा है ये एक्सट्रैक्ट करके पैकेट के फॉर्म में नेटवर्क लेयर को डिलीवर कर दिया जाएगा। सो हेडर एंड ट्रेलर को रिसीविंग एंड पर हटा दिया जाता है प्रोसेसिंग के बाद, एंड देन दिस पार्ट इज गिवन टू द अपर लेयर. सो दिस इज द रिवर्स ऑफ द फ्रेमिंग process that happens at the receiving side. Okay, so this is very simple function of the data link layer. किसको? There is no specific name. There is no specific name given for this. Okay, so flow control we are not going to study. We have already seen. Now the important function that we will study is error detection and correction, or error control jointly we say that. So we will say that error control. Error control. Okay. Before going to do error control, let's try to understand how data link layer is implemented in a machine. How data link layer is implemented in a machine. So actually the data link layer is unique in the sense that it is a combination of both things, hardware and software. So your DLL is actually a combination of
हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. सो दैट मीन्स इससे ऊपर की जितनी भी लिंक्स हैं, ऑल लिंक्स आर इम्प्लीमेंटेड इन सॉफ्टवेयर लाइक नेटवर्क लेयर, network layer, transport layer, application layer, all links are implemented in completely software form. But this is the first link that is implemented in both hardware and software, and this is the only link actually. इसके नीचे जो physical layer है, that is complete hardware. Okay, so this is the link that implemented in software and hardware. So some functions are implemented in form of hardware and some functions are implemented in form of software. Okay, so there are some functions like receiving the packets from the network layer, the function of receiving the packet from the network layer and the function of the giving the packet to the network layer are implemented in form of software. Okay, ध्यान रखना है. even second thing, फ्रेम में एड्रेस पुट करना, हार्डवेयर एड्रेस पुट करना फ्रेमिंग लेवल पर, ये काम भी सॉफ्टवेयर फॉर्म में ही किया जाता है और उनको प्रोसेस करना फ्रेम को. Okay, similarly we will see that there is a control unit. This is a diagram that show you the architecture of the hard data link layer. So activating the control unit is also implemented in form of software, and rest of the things are implemented in terms of hardware. So now let's see how the data linker is actually implemented in hardware. You can see these are the cards. So generally your data link layer is implemented in form of a hardware and a combination of the software. So software part is integrated with the operating system and the hardware part is actually is with NIC. You might have heard a network interface card. ये term आपने सुनी होगी, network interface card, and sometimes we call it network adapter also. ठीक है, network adapter भी आपने term सुनी होगी. Have you heard network adapter? And or sometimes you call it LAN card, or there is also a term Ethernet card. Ethernet card is a bit specific term क्योंकि ज़्यादातर कंप्यूटर्स में हम Ethernet इम्प्लीमेंट करते हैं ज़्यादातर जगह पर. So that's why जो कार्ड आता है हम उसे Ethernet कार्ड भी बोलते हैं. ये तो सुना होगा Ethernet कार्ड. So this kind of they are this kind of hardware, इस तरीके का. एंड इनिशियली 90s के अराउंड में या उससे थोड़ा सा लगभग उसी टाइम तक योर कार्ड वाज योर जो लैन कार्ड है वो जनरली आपके एक हार्डवेयर के फॉर्म में आता था और उसे पीसीआई स्लॉट में अटैच किया जाता है. बट नाउ डेज योर लैन कार्ड आज कमिंग इन फॉर्म ऑफ ए चिप एंड दैट चिप इज इंटीग्रेटेड in the motherboard of your computer, like it may be laptop or it may be a computer desktop. So ये अब आपके चिप के फॉर्म में आपके मदरबोर्ड पर आते हैं नाउ डेज. तो आपको अलग से आपने देखा होगा कहीं भी आपको लैन कार्ड परचेज करके नहीं लगवाना होता है. हालांकि इससे पहले कुछ डेस्कटॉप में वाईफाई कार्ड नहीं आता था. नाउ वाईफाई कार्ड इज ऑल्सो बिकम पार्ट ऑफ मदरबोर्ड्स इन डेस्कटॉप्स एज वेल. लैपटॉप में तो होता था बट डेस्कटॉप में भी अब आने लग गया है. Okay, now let's see what is the structure of your network adapter. You can see that this is your hardware part of your network adapter. This is a host bus, that is your PCI bus. That this PCI bus connects your network adapter to CPU. You can see that there is a connection from the CPU using this bus and from your main memory. This is your RAM memory, this is your CPU of your machine, and this is the main part that is having your adapter. So your adapter actually contains both the part. Physical layer is also there, and this is your network adapter part. And here the controller is the main important hardware that perform the majority of the functions of your data link layer. ठीक है. Now controller का job क्या होता है? It receives the packet from memory, क्योंकि आपका जब भी जो नेटवर्क लेयर ने या ऊपर के लेयर्स ने जो भी पैकेट प्रोसेस किया, दैट पैकेट इज स्टोर्ड इन द मेमोरी. सो कंट्रोलर रीड्स दैट पैकेट फ्रॉम द मेमोरी, डू सम प्रोसेसिंग एंड एरर करेक्शन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद इट activates the physical layer and your physical layer, or actually it contains a transmitter here. The job of this transmitter is to upload your frame to the connected link. So अगर आपकी Ethernet केबल है तो Ethernet के पर पैकेट अपलोड हो जाएगा, अदर और कोई केबल है तो वहाँ अपडेट हो जाएगा. So this main role is this controller. Okay,
So this is the controller that implements the functions. कौन कौन से implement function ये implement करता है? Mainly जो function implement करता है वो मैक media access control का function यही implement करता है. ओके, एंड एरर करेक्शन और डिटेक्शन से रिलेटेड जो कोडिंग है, एरर डिटेक्शन करेक्शन, उससे रिलेटेड भी फंक्शंस इसमें ही इंप्लीमेंट होते हैं. एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन, these functions are implemented by this controller. Okay, and this controller is comes in form of a hardware which is attached to your motherboard, CPU, or your machine's motherboard actually. Okay, so this is just a schematic. I will suggest you to just go through the book, so you will be able to understand the details of these things. Most of the things I have told you, so बहुत नया कुछ आपको बुक में नहीं मिलेगा. Almost everything I have told you. जो मैंने बताया, this is the schematic diagram that you need to give, and then you need to explain what are the functions that your lane card is doing, what components are implemented in form of software, what components, what services that have been implemented in hardware. So generally these two services like media access control and error detection and correction, both these services are implemented by this machine. Okay, and then it activates your transmitter, and transmitter uploads the packet to your destination. Similarly, when packet is there, then it receives the packet. So even one more option is there, actually one part or is also implemented in software, but is interrupt, because this controller should handle the interrupts, because when a packet is arrived, a interrupt will be issued, and those interrupt, once that interrupt is issued, this controller should do something or do their task to receive a packet that has been sent by the senders, because any machine can also be receiver. So this controller is attached with sender and receiver. Your machine have both the things, or that is the part of the card actually, sending and receiving, transmitter and receiver you can say. So transmitter and so your receiver actually generates many times interrupts, because once a receiver receive a packet, it will generate the interrupt, and those interrupts need to be handled by your controller. ठीक है, तो क्या आपको मालूम है ऑपरेटिंग सिस्टम में इंटरप्ट का कॉन्सेप्ट क्या है? तो कोई भी इंपॉर्टेंट टास्क होता है तो उसके लिए इंटरप्ट इशू की जाती है. व्हेन ए पैकेट विल अराइव, interrupt will be raised, and those interrupts need to be handled by this controller. So that part is actually that need to be handled by your NIC card or network interface card, and this function of the card is implemented in form of software functions. ठीक है. सिमिलरली मैनी टाइम अपर लेयर से भी कुछ इंटरप्ट आ सकती हैं, जैसे नेटवर्क लेयर ने कोई पैकेट रैम में आपके लिए छोड़ा है, तो दैट इंटरप्ट नीड टू बी हैंडल्ड बाय द सॉफ्टवेयर पार्ट ऑफ योर कार्ड, एंड देन कार्ड that software part will handle that interrupt and will activate the controller. और जब कंट्रोल एक्टिवेट हो जाए, कंट्रोलर will receive the packet from here, and then will do certain provisions for doing transmission of the packet. So transmission के लिए आपको मीडिया एक्सेस कंट्रोल करना है. मीडिया एक्सेस का मतलब मीडिया का एक्सेस करना है. पहले आपको एक्सेस अचीव हो जाएगा, देन आप में एरर डिटेक्शन से रिलेटेड कोडिंग करना है, एंड देन पैकेट ट्रांसमिट कर देना है. So all these tasks will be done by your card. Okay. So now let's talk about what is error detection and correction. So let me first tell you the idea of error detection and correction. So actually as I already told you that when we transmit a packet from one machine to another machine, or one hop to another hop, your packet may got some errors. Like suppose this is a sending machine. I am just showing two machines, बीच में कोई hop मैं नहीं दिखा रहा हूँ, and there is a some link between this. Okay, now once you send a packet from this machine using this link, your packet will travel through this link, but you know that links have certain interference also, interference and certain undesirable effects that may introduce some errors, like noise may be there, varieties of noise may be there, varieties of interference may be there,
वायरलेस लिंक है तो और ज़्यादा इंटरफ्रेंस होता है. सो देर इज ए पॉसिबिलिटी और देर इज ए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इंट्रोड्यूस सम एरर्स इनटू द पैकेट. ओके, सो आपका जो पैकेट जब ट्रेवल करेगा, सो इट मे बी द सम प्रोबेबिलिटी मे बी देयर और सम प्रोबेबिलिटी इज देयर कि आपके पैकेट्स में कुछ बिट्स चेंज हो जाए, एंड वी कॉल इट एरर हैव हैपेंड. सो ऐसा हो जाए तो वी कैन कॉल दैट ट्रांसमिशन एरर ऑकर्ड. ट्रांसमिशन एरर हैव ऑकर्ड. सो अब जब ट्रांसमिशन एरर हो गई है, then obviously once some transmission error have occurred, packet will reach to the receiver. Now receiver should be able to understand that some error is there, so it need to take certain measures to handle that error. Now one mechanism तो ये है कि पहले error अगर हुई है तो आप उसे detect करिए, and once you are able to detect the error, then you need to decide. So once you detected the error, you have two options: either correct the error. If there is error, yes, then correct the error, or there is another option: discard the packet. Discard the packet. I am using the term packet, but frame भी हो सकती है. डेटा लिंक लेयर पर फ्रेम होता है, लेकिन जनरलाइजेशन के लिए मैं यहाँ पर पैकेट टर्म इस्तेमाल करता हूँ. ठीक है, डेटा लिंक लेयर की बात होगी तो हम यहाँ फ्रेम टर्म ऐड कर लेंगे. डिस्कार्ड द पैकेट एंड आस्क द सेंडर फॉर रीट्रांसमिशन. ओके, दीज आर द टू पॉसिबिलिटीज. नाउ क्वेश्चन अराइज होता है कि ये तो चलो ठीक है, बात की बात है, एरर अगर है तो करेक्ट करना है. नाउ अगेन देयर इज अ क्वेश्चन, हाउ द रिसीवर विल बी एबल टू करेक्ट द एरर्स, एंड इफ इट इज नॉट करेक्टिंग द एरर्स एट द रिसीविंग पॉइंट, देन it need to discard the packet and then ask for retransmission. So now again the question arises, how the receiver will be able to ask the sender to do the retransmission of the packet. We have already seen this piece, this part we have already discussed at the transport layer. Retransmission कैसे होता है, how retransmission is done, how the receiver enables sender to do retransmission, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं. ओके, करेक्शन वाला है, हम इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, बट आई विल जस्ट गिव यू आइडिया कि हाउ द करेक्शन कैन बी डन. एंड यू ऑल्सो नो दैट many time in many communication scenarios or communication networks, it may not be possible, always may not be possible to the correct errors or detect or do this kind of stuffs, because in order to correct the errors you require lot of bits. We will talk about. So first let's try to understand this, then we will talk about both of these issues. So once some error has been introduced by the channel, then receiver should be able to know whether there is error into the packet or not. Okay, now you know that in order to understand whether there is an error into the packet, so suppose this is the packet that has been received with errors. Okay, red packet with errors, and green is the original packet. Let's say this was the original packet that was sent by the sender. So green is the packet that was original, that has been sent by the sender, but this is the received packet. Now how transmit, there is one way कि ट्रांसमीटर कैसे रिसीवर कैसे पता लगा सकता है दोनों में एरर है. ओबियसली दोनों पैकेट्स को कंपेयर कर ले, एंड बोथ आर डिफरेंट, दैट मीन्स देयर इज एरर. बट नाउ क्वेश्चन अराइज, हाउ रिसीवर विल बी एबल टू नो दैट दिस इज द ओरिजिनल पैकेट. दैट मीन्स अगर रिसीवर के पास ओरिजिनल पैकेट होगा तभी तो वो इस पैकेट का इससे कंपेरिजन कर पाएगा, बट यू नो दैट रिसीवर कैन नॉट हैव दिस पैकेट, है ना. अगर रिसीवर के पास ये पैकेट है तो फिर ये ट्रांसमिशन की जरूरत ही नहीं है ना. सो this is not practical. Receiver cannot have this green kind of packet, that is the packet that is sent by sender. So now receiver should have a mechanism so that receiver will be able to see this packet or do something with this packet, or should have some information, and with that information receiver will be able to know that this packet contains error or not. Okay, so for this task we do coding.
हाउ कोडिंग इज डन? सो कोडिंग में हम क्या करते हैं, लेट मी टेल यू. सो सपोज दैट there is a sender is sending some bits x to the receiver. ठीक है, this is your destination and this is your sender want to send some bits x. Now what sender will do, sender objective is that once receiver receive x, then receiver should be able to know whether whatever it have received is actually x or not. है ना, रिसीवर को यही तो जानना है कि रिसीवर को जो मिला है वो x ही है या और कुछ है ना, रिसीवर को यही तय करना है. सो नाउ रिसीवर कैन नॉट डू इट सेल्फ, सो सेंडर नीड टू प्रोवाइड ए हेल्प इन दिस रिगार्ड. सो व्हाट सेंडर कैन डू, सेंडर विल एक्चुअली कंप्यूट ए फंक्शन ऑफ दिस x. ठीक है, सो इट विल अप्लाई ए फंक्शन ऑन दिस x. सो लेट्स से दैट f इज सम फंक्शन, so it will compute fx, and let's say fx is equal to let me use a variable for that, r. Okay, so sender is using a function f में x पास किया, जो डेटा सेंड करना है वो पास किया, and it computes r. Now what sender will do, sender will send both the things x plus r, sorry, x plus r to the receiver. Now within this packet both x plus r will be sent to the destination. Now assuming that, with this assumption that r is not going to change, r में कोई change नहीं होता है, let's assume r is not change, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं. So it may be the case कि x में change आ सकता है या नहीं भी आ सकता है. So assume कर लीजिए रिसीवर को x डैश मिला और r मिला. ठीक है, आपने नेटवर्क पर ट्रांसमिशन किया ये x प्लस आर, बट नेटवर्क में चेंज द थिंग्स. सो x डैश प्लस आर सपोज इज द थिंग्स दैट रिसीवर हैव रिसीव्ड. नाउ अगर सब कुछ ठीक है तो x डैश इक्वल टू x होगा. देयर इज नो एरर वाई इंट्रोड्यूस्ड बाय द चैनल, देन x डैश इक्वल टू x. इफ देयर इज एरर इनटू द चैनल, देन x डैश विल नॉट बी इक्वल टू x. यस और नो? ऑब्वियसली यस. ठीक है, नाउ यू नो दैट द फंक्शन ऑफ दिस प्रॉपर्टी, फंक्शन की एक प्रॉपर्टी होती है, सेम इनपुट के लिए सेम आउटपुट मिलता है, डिफरेंट इनपुट विल गिव यू डिफरेंट आउटपुट. नाउ सो व्हाट रिसीवर कैन डू, रिसीवर को जो एक्स डैश मिला है, रिसीवर विल पास दिस एक्स डैश टू दिस फंक्शन एफ. रिसीवर विल हैव एक्सेस टू द सेम फंक्शन, दोनों को रिसीवर के पास भी वही फंक्शन होगा, एंड देन इट विल कंप्यूट, लेट्स से दिस कंप्यूटेशन से दिस इज आर डैश. Now assume that this r dash equal to r, वो इसको ये जो r मिला है और एक जो कंप्यूट किया, इन दोनों को कंपेयर करेगा. सो इफ बोथ आर इक्वल, तो इसका मतलब क्या हुआ, x डैश इक्वल टू x है. ठीक है, दिस इंप्लाइज x डैश इक्वल टू x, क्योंकि सेम इनपुट दे रहे हैं तभी तो r आउटपुट मिल रहा है आपको. बोथ आर थिंग्स सेम, दैट मीन्स r डैश इक्वल टू r, दैट मीन्स यू आर गेटिंग आउटपुट एज r. जब आप ये फीड कर रहे हैं तो r तभी मिलेगा जब ये भी x हो. So that means there is no change into the packet and you can accept the packet. But suppose r is not equal to r dash, ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं जो आपने यहाँ कैलकुलेट किया. इसका मतलब क्या हुआ, ये x डैश और x अलग नहीं है, सॉरी सेम नहीं है, x डैश इज नॉट इक्वल टू x और x इक्वल नॉट इक्वल टू x डैश. सो इसका मतलब क्या हुआ, देयर इज एन एरर इनटू द पैकेट, देयर इज एरर इनटू पैकेट. ठीक है, तो इस केस में आप क्या करेंगे, डिस्कार्ड कर देंगे पैकेट को. नाउ आप ये कह सकते हैं कि सर आर में भी तो चेंज हो सकता था, तो नाउ हम उस क्वेश्चन को भी एड्रेस कर देता हूं मैं, कि अगर मान लीजिए आर में भी चेंज हो जाता है तो क्या होगा, यहाँ आपका आर डैश इक्वल टू आर मैच नहीं करेगा, तो हम आर को पैकेट का पार्ट मानते हैं, तो आर में भी चेंज अगर होता है तो भी हम डिस्कार्ड कर देंगे. केवल एक्स में चेंज हुआ, आर में चेंज नहीं हुआ, तो आपको यहाँ जो आर डैश मिला है और आप जो कंप्यूट करेंगे यहाँ जो आर मिला है और यहाँ जो आर डैश कंप्यूट करेंगे दोनों अलग अलग होंगे, क्योंकि आपका आर चेंज हो गया है बीच में, और आप यहाँ आर डैश जो कैलकुलेट कर रहे हो वो एक्स के बेस पर कैलकुलेट कर रहे हो, जो कि एग्जैक्टली यहाँ जैसा है, लेकिन दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, तब भी आप पैकेट को डिस्कार्ड कर सकते हैं. हालांकि इसमें एक नेगेटिव पॉइंट है कि पैकेट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, रिडंडेंसी में थी, लेकिन हम उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, तो अल्टीमेट हम डिसीजन लेंगे कि पैकेट को हम ड्रॉप कर देंगे.
सो दिस फंक्शन इज कॉल्ड एफ, जो मैंने कहा कोडिंग फंक्शन, हम इसे बोलते हैं एरर डिटेक्शन फंक्शन। एफ इज कॉल्ड एरर डिटेक्शन फंक्शन और एरर डिटेक्शन कोड समटाइम्स वी कॉल इट, ठीक है, एरर डिटेक्शन फंक्शन और एरर डिटेक्शन कोड। ओके, and this function or these set of bits are called redundant bits or redundancy bits. Redundancy bits, and sometimes we call them error detection bits also. Error detection bits. Okay. सो नाउ क्वेश्चन अराइज होता है, क्या ऐसे फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं? आंसर इज यस. सो टुडे आई एम गोइंग टू क्लोज हियर, बट इन नेक्स्ट क्लास वी विल सी सम ऑफ दीज फंक्शंस, स्पेशली जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो आप यूज करते हैं, दैट इज साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, CRC, रिडंडेंसी चेक, जो हम पढ़ेंगे. चेकसम तो हम डिस्कस कर चुके हैं, सो चेकसम मैं नहीं डिस्कस करूंगा, बट वी विल डिस्कस CRC. Okay, so this is the idea of error detection and correction. Any question? Now there is one more thing that I also want to introduce. एक छोटा सा टॉपिक है, टॉपिक नहीं है, it is just two definitions actually. Now error detection में दो ऑप्शंस हैं आपके पास error detection correction के. You have two choices to recover from errors at the receiving end. एक चॉइस तो है कि जस्ट डू एरर डिटेक्शन एंड करेक्ट द एरर्स एट द रिसीवर एंड. तो जैसे मैंने कहा ना कि जब आप एरर डिटेक्शन कर पा रहे हैं तो एक तो ये करिए, रिसीविंग साइड पर करेक्ट कर लीजिए. ओके, सो एरर डिटेक्शन के करेक्शन के लिए आपको जो रिडंडेंस बिट्स मिल रही हैं, सेंडर विल सेंड यू दोज रिडंडेंट बिट्स एंड दीज बिट्स विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई एट व्हाट प्लेसेस इन द पैकेट्स एरर हैव इंट्रोड्यूस्ड. मतलब कौन कौन सी बिट्स आपकी चेंज हो गई हैं. ये बिट्स जो एडिशनल बिट्स आ रही हैं, ये आपको बताएंगे या हेल्प करेंगे रिसीवर को कि किन पोजीशंस पर एरर है. और जब आपको पता चलेगा किन पोजीशन पर एरर है, तो सिर्फ क्या करना है, रिकवर करने के लिए बिट्स को ट्रांसपोज कर देना है. दैट मीन्स 1 को 0, 0 को 1 कर देना है, एंड यू विल बी एबल टू करेक्ट द एरर. सो दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड एरर करेक्शन मेथड, FEC शॉर्ट में. लेट मी FEC, forward, F for forward, E for error and C for correction. Forward error correction method. So ये है forward error correction method, जहाँ पे आप क्या करते हैं, you detect the error at the receiving end and also correct the errors at the receiving end. Okay, and sender sends you the set of bits to do this correction. So sender ने जो आपको bits भेजी हैं, ये आपको receiver को enable करेंगी. So receiver will be able to detect and correct errors at the receiving end. So this method is called forward error correction method. Now ये जो स्कीम है, यहाँ पे आप क्या करते हैं, at the receiving end you detect the errors and then you do not correct the errors, you discard the packet and then you ask for transmitter or sender to retransmit. This is called BEC, backward error correction. EC फॉर एरर करेक्शन है, B फॉर बैकवर्ड. इसे हम बैकवर्ड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम एरर करेक्शन के लिए वापस कांटेक्ट कर रहे हैं सेंडर को. सो सेंडर इज हेल्पिंग इन द रिकवरी ऑफ द एरर. यहाँ फॉरवर्ड है क्योंकि यू आर नॉट टेकिंग द हेल्प फ्रॉम सेंडर. सो नाउ FEC तभी पॉसिबल है, सॉरी BEC तभी पॉसिबल है जब दोनों साइड से कम्युनिकेशन पॉसिबल हो. सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट. लाइक टेलीविजन कम्युनिकेशन है, सो सैटेलाइट से आपको टेलीविजन सिग्नल मिल रहे हैं, सो दैट इज ए वन वे कम्युनिकेशन. टेलीविजन कैन नॉट रिपोर्ट द एरर्स टू द सैटेलाइट्स एंड कैन टेल द फॉर retransmission. It cannot do. Television doesn't have transmitters, they have only the receivers. Like radio, FM, you cannot do backward error correction there, because you do not have a channel to you do not have backward channel for them. आप वापस से ट्रांसमीटर को कांटेक्ट नहीं कर सकते. सो बैकवर्ड एरर करेक्शन कैन बी डन ओनली व्हेन यू हैव बैकवर्ड चैनल, दैट मीन्स बाई डायरेक्शनल चैनल है. और फॉरवर्ड एरर करेक्शन
आप दोनों केसेस में कर सकते हैं, लेकिन फॉरवर्ड एरर करेक्शन इज ए कॉस्टली, क्योंकि बैकवर्ड एरर करेक्शन में जो ये आर है, इसका साइज फॉरवर्ड एरर करेक्शन के साइज के कंपैरिजन में काफ़ी छोटा होता है। आर इज़ वेरी वेरी लार्ज इन केस ऑफ दिस एपीसी, आर में नंबर ऑफ बिट्स, तो दैट मीन्स ओवरहेड बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है, डेटा के साइज से भी ज़्यादा एक्सटेंड कर जाता है। एंड दीज कोड फॉर डूइंग दिस करेक्शन इज आर वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स। ओके, सो दैट्स वाई इन रेयर सिनारियो वी डू दिस एफईसी, जहाँ पे हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, दैट मीन्स बैकवर्ड चैनल अवेलेबल नहीं है, बायडायरेक्शनल कम्युनिकेशन नहीं है, देन वी हैव टू गो फॉर एफईसी। बट एक लिमिट तक ही हम एफईसी कर फॉरवर्ड करेक्शन करते हैं, ज़्यादा बिट्स हम नहीं भेज सकते, कुछ ही बिट्स तक की करेक्शन करते हैं। बट बैकवर्ड एरर करेक्शन कैन बी डन ऑन नेटवर्क्स, बिकॉज नेटवर्क में जो कम्युनिकेशन होता है जनरली बाई डायरेक्शनल होता है, सो दैट इज़ बेटर। एंड बैकवर्ड एरर करेक्शन में आपको लगता है कि पैकेट रिट्रांसमिशन ओवरहेड क्रिएट कर सकता है, हाँ कर सकता है, लेकिन कोई और हमारे पास चॉइस नहीं है। और एक्चुअली एक एडवांटेज हमें यह भी मिलता है कि इफ़ योर नेटवर्क इज वायर्ड वन, तो वायर्ड में एरर के चांसेस कम होते हैं, तो आपको रिट्रांसमिशन की ज़रूरत कम पड़ती है। सो दैट वे ओवरऑल आपको बेनिफिट्स यही होता है। Okay, so these are the concepts related to error detection and correction. In next class we will talk about some schemes. Okay.